करेंगे तो 1500 प्लस 110 प्लस 900 प्लस 500 दैट कम्स टू 4000. देन अगर हम लोग टोटल करेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 20 प्लस 15 20 plus 15 plus 10 plus 15 that comes to 60. Horsepower 800 plus 500 plus 200 that is 1500. 6000 plus 40,000 plus 30,000 plus 20,000 that comes to 1,50,000. Then 240 plus 180,000 plus 120 plus 60 that comes to 6 lakhs. 1,50,000 plus 90 plus 60 that comes to 3 lakhs. Last one is light points 40 plus 30 plus 20 plus 10. This time light points का information is given. So fine. And apportion the cost of various departments to बाय मोस्ट इक्विटेबल मेथड. तो बस इक्विटेबल मेथड के हिसाब से अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो रेंट के बारे में अगर बात करेंगे तो अगेन इट इज़ डिपेंडेंट ऑन एरिया. तो विल से एरिया के बेसिस पे जाएगा वो. अब कैलसिफाई फटाफट कैसे करेंगे. 10,000 डिवाइडेड बाय टोटल बेसिस. 10,000 डिवाइडेड बाय 4,000 मल्टीप्लाई 1500 इक्वल टू दैट इज 3750. Then 1100 equal to that is 2750. Then 900 equal to that is 2250. 500 equal to that is 1250. Now if I talk about repairs is dependent on value. repairs of plant, तो मेरा प्लांट का वैल्यू दिया हुआ है 4th एलिमेंट में and that amounts to rupees 6 lakh value of plant. तो कैलकुलेशंस कैसे होगा. 6,000 डिवाइडेड बाय 6 lakhs मल्टीप्लाई 2,40,000 equal to that comes to 2,400. Then for B it is 1,80,000 equal to that is 1,800. Then for C it is 1,20,000 equal to that is 1,200. 60,000 equal to that is 600. This was my repairs to plant. Then depreciation in plant is also dependent on value of plant. So I will say 4,500 divided by value of plant is 6 lakhs multiply 2,40,000 equal to 1,800. 180,000 1,80,000 is equal to 1,350. 1,20,000 equal to 900. Then 60,000 equal to 450. So depreciation is also done. Now if we talk about supervision charges. Supervision charges, total expenses 1,500 for how many employees, because it is dependent on number of employees. So I will say number of employees. Number of employees is given as 60. 1,500 divided by 60 multiply 20 employees के लिए 500 रुपये का खर्चा. 15 employees 375 is my cost. 10 के लिए इतना and 15 के लिए it is 375. Okay. Then if I talk about fire insurance stock. Okay. So फायर इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें, फायर इंश्योरेंस इज फॉर स्टॉक, तो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, स्टॉक वैल्यू पे. बट रिमेंबर वन थिंग, पहले सबसे पहले हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, ये 2, तो प्लीज मेक दिस चेंज. नाउ फायर इंश्योरेंस का अगर हम लोग बात करें, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज गिवन 3 लाख रुपीज. वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो 3 लाख का स्टॉक इंश्योर करने के लिए 5,000 का खर्चा, तो
कितना रहेगा मेरा 1,50,000 के लिए, उस हिसाब से बाइफर्केशन करना है. I will say 5,000 divided by value of stock 3 lakh multiply 1,50,000 equal to, that comes to 2499, it means 2500. Then 90,000 equal to, that comes to 1,500. Then 60,000 equal to, that comes to 1,000. Okay, so this is my answer for this. If I talk about power, you know that we have already done in my previous question that power depends upon हॉर्स पावर, जितना कैपेसिटी उस हिसाब से खर्चा. एंड हॉर्स पावर का आपका यहाँ पे टोटल है, हॉर्स पावर का टोटल किधर गया, हॉर्स पावर का आपका टोटल है 1500, तो उसके हिसाब से होगा HP ऑफ मशीन, HP ऑफ मशीन, दैट इज 9000 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाई 800 इक्वल टू, दैट इज 4800. 500 equal to, that is 3000. 200 equal to, that is 1200. Then this is my answer. Machine is not there in service department, तो वहाँ पे पावर का खर्चा होगा नहीं. लाइटिंग का खर्चा आपका किस चीज़ पे जाएगा, लाइट पॉइंट्स, जहाँ पे जितने लाइट पॉइंट्स है उस हिसाब से, तो आपका रहेगा लाइट पॉइंट्स. सपोज ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होता तो हम लोग क्या करते, एरिया के हिसाब से करते थे. सो नाउ 1000 का खर्चा कितने लाइट पॉइंट्स है 100, तो डिवाइड करने के बाद 1000 डिवाइड बाय 100, एक के पीछे 10 का खर्चा आ रहा है, इनटू 40 लाइट पॉइंट्स के लिए कितना, तो 40 इक्वल टू कम्स टू 400. 30 लाइट पॉइंट्स के लिए 30 इक्वल टू, दैट इज 300, 200 एंड देन विल से 100. और एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस लाइबिलिटी, एम्प्लॉयर्स इंश्योरेंस लाइबिलिटी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस निकाला है, अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन हिज वेजेस, जितना ज़्यादा वेजेस रहेगा उस हिसाब से उसका प्रीमियम वगैरह पे किया जाएगा उसके लाइफ का. तो ना वैल्यू कहीं पे दिया हुआ है, वेजेस कितना पे होता है, यस इट इज़ गिवन, इट इज़ 4th एलिमेंट, टोटल वेजेस. इट इज़ गिवन दैट 1500 का 15,000 expense for divided by 1,50,000 into 60,000 equal to, that is 6,000. Then 40,000 equal to, that is 4,000. 30,000 equal to, that is 3,000. And then 20,000 equal to, that is 2,000. Fine, we are done with expenses which were given directly. Now आपको क्या चेक करना होता है, बेसिस कॉलम में कहीं पे आपको वेजेस या फिर मटेरियल का एक्सपेंस दिया है क्या, एरिया है, फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, हॉर्स पावर है, फिर टोटल वेजेस, तो यहाँ पे आ जाएगा वेजेस. और आपको वेजेस का खाली किसका खर्चा लिखना है, डोंट राइट फॉर A, B एंड C, यू हैव टू राइट दैट अमाउंट ओनली फॉर D डिपार्टमेंट, बिकॉज ये तीनों का वेजेस का खर्चा डायरेक्ट वेजेस में जाएगा. बट डायरेक्ट वेजेस ऑफ डिपार्टमेंट D, दैट इज सर्विस डिपार्टमेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट वेजेस फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू. तो आपका इनडायरेक्ट वेजेस है डिपार्टमेंट D के लिए वेजेस है 20,000. इसमें कुछ आएगा नहीं, आई विल से गिवन, डायरेक्टली दे दिया है 20,000 आएगा यहाँ पे अमाउंट जो लिखा हम लोग ने. टेक द टोटल, मटेरियल का खर्चा कहीं पे दिया नहीं है. सेकेंड लास्ट आइटम विच इज वैल्यू ऑफ स्टॉक, दैट इज नॉट खर्चा, दैट इज स्टॉक ऑफ मटेरियल. नाउ द थिंग इज वी नीड टू टेक टोटल, दैट्स इट, देन यू विल अराइव एट योर फाइनल आंसर. So let's start. First this column, $72,000. Then 22,150. Then 15075. Then 10,000. Then 5,000.
24775. So this is my entire solution. 4775, 10,000, 15075, 22150, and 52,000. This is total overheads. That's it. हम लोग ने पूरे खर्चे को डिवाइड कर दिया है. So just write the solution of question number 2. Okay, so question number 2 is done. Then our question number 3. So let's start reading that question and let's understand कि format कैसा बनेगा. The following cost information for a period is available for a small engineering unit. Information regarding small unit is given. Okay. Allocated expenditure. You remember that allocated expenditure means what? Specific expenses which are related to specific department. We know there is no need to divide them. So it is given particulars total. ठीक है. Indirect wages 29,300. Allocated production department there are two, machine shop and assembly shop. Direct bifurcation is given. In machine shop 8,000 का खर्चा हुआ. For assembly it is 6,000. For general plant 4,000 and for stores 11,300. Again, details regarding store consume is also given. Total amount 6,700. Machine shop, out of which 2,200 has incurred for machine shop, 1,700 for assembly shop, 1,100 for general plant services, and 1,700 for stores. Okay. Supervisory charges are also given, total 40,000, and supervision is there only in case of which department? General plant service department. Fine. Expenses to be apportioned. There are certain expenses जिसका bifurcation is not given, bifurcation regarding which is not given. Power and fuel 15,000, rent 15,000, insurance 3,000, depreciation 1 lakh. So these are my 4 expenses. I need to bifurcate them into 4 departments: machine, assembly, general plant, and stores. For that matter, they have given us some additional information. Okay. First is machine shop, assembly, and general plant, and then stores. This time data is not given in horizontal format, it is given in vertical format. If you see that, floor area for machine shop is 2,000, for assembly is 1,000, and floor area for general plant is 500, and for stores it is 1,500. Take the total 2,000 plus 1,000 plus 500 plus 1,500. That comes to 5,000. टोटल एरिया कितना है मेरा? 5,000 एरिया है. HPRs की अगर हम लोग बात करें 3,500 plus 500 plus 1,000. Total HPRs also 5,000. Then number of employees, if we say 30 plus 15 plus 5 plus 10. So that comes to 60 employees are there. If I talk about investment in machinery and all, so you will come to know 6 lakh 40 plus 2 lakh plus 10,000 plus 1 lakh 50,000. That is nothing but 10 lakh rupees. Okay. You are required to prepare an overhead primary distribution. That is जो distribution हम लोग कर रहे हैं उसका statement बनाने बोला है. Fair enough. So now again columns में अगर बात करें तो first 3 column तो आने ही वाले हैं. Then there are 4 departments. So again 4 columns will come. So we'll prepare this format. So question number 3 we read it. Then format is there in front of you. You can see that there are 4 departments. So we have prepared this. Now there were 4 expenses जिसका bifurcation उन्होंने दे दिया था. For that we can say allocation. So if you want you can say first thing which they have given सीधा directly
अलोकेशन, 4 एक्सपेंसेस का बाइफिकेशन उन्होंने सामने से दे दिया है. Allocation of 4 expenses. First, indirect wages, store consumed. Indirect wages. Then stores consumed. Then your supervisor salary and other salary. Supervisor salary and other salary. Navigation of this expenses is given. जिसका नहीं दिया उसको अपने को करना पड़ेगा. That is known as apportionment. डिवाइड करना पड़ेगा, अपोर्शन करना पड़ेगा. ऐसे कितने एक्सपेंसेस है? There are 4 expenses. First, power and fuel. So I will say power and fuel. Then rent, insurance, depreciation. Rent, insurance, depreciation. Okay. Now we'll talk about amounts. Total amount 29,300. Okay. 6,700. Then 14,000 and 10,000. Okay. About apportion जिसको करना है 15, 15, 3, 1. तो 15, 15, 3, 1. ठीक है, तो these are my expenses. For first 4 expenses, bifurcation is given. 29,300. For all this, we will say given. Data सामने से दिया है, कौन सा खर्चा कहाँ पे जाएगा. 8, 6, 4, 11, 300. Okay. 8, 6, 4, 11, 300. Then 2,200, 1,700, 100 and 1,700, 14,000, 10,000. यहाँ पे हुआ है खाली ये खर्चा, तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं है. ठीक है. Once done with this, now indirect cost, that is apportion जिसका करना है power and fuel. So you need to think कि भाई ये खर्चा कौन से रेशियो में जाएगा. तो पावर किस चीज़ पे डिपेंड करता है? HP आवर्स, जितना हॉर्स पावर आवर्स यूज़ किया रहेगा. तो लेट्स स्टार्ट 15,000 और आपका टोटल हॉर्स पावर है 5,000. तो 15,000 डिवाइड बाय 5,000 मतलब पर आवर का खर्चा 3 रुपीज़ आता है. इंटू मशीन शॉप के लिए 3,500 आवर्स. सो इट कम्स टू 10500. For assembly it is 500 hours, so it is 1,500. Then 1,000 hours here, 3,000. This is your total division. General plant services, वहाँ पे power and fuel use नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे खर्चा नहीं आएगा. Then if I talk about your rent का cost, तो rent is 15,000 and it is dependent on what? Floor area. जितना एरिया ज़्यादा रहेगा उतना bifurcation उस हिसाब से हो जाएगा. Floor area. Total 15,000 divided by my area is 5,000. तो 15,000 divided by 5,000 into machine shop का area है 2,000 square feet. So that your expense is 6,000. For 1,000 square feet it is 3,000. Then 500 is equal to 1,500. Then 1,500, 4,500 is का आंसर.
देन इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? इफ़ आई टॉक अबाउट इंश्योरेंस, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन योर इन्वेस्टमेंट. हायर द इन्वेस्टमेंट, उसका आप इंश्योरेंस निकालोगे उतना ज़्यादा खर्चा रहेगा. दैट इज़ इन्वेस्टमेंट, यू कैन से इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी. तो जितना ज़्यादा मशीनरी या फिर स्टॉक का खर्चा रहेगा उतना आपका इंश्योरेंस ज़्यादा निकलेगा. तो टोटल कितना है? 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है. इवन डेप्रिसिएशन भी अगर मैं बात करूँ तो मशीनरी का वैल्यू नहीं दिया है. तो सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा अपने पास? इन्वेस्टमेंट. जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगा मशीनरी में उतना आपका डेप्रिसिएशन ज़्यादा रहेगा. 3000 डिवाइडेड बाय योर इंश्योरेंस का वैल्यू है 10 लाख, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 10 लाख, मल्टीप्लाई 3000 डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई करने के बाद 6,40,000 इक्वल टू दैट कम्स टू 1920. then 2 lakh equal to that comes to 600, then 10,000 equal to that comes to 30, and 1,50,000 that comes to 450. For depreciation, if we say again, total amount is 1 lakh rupees divided by 10 lakh into 6,40,000 के लिए 64,000 आ जाएगा, 2 लाख के लिए 20,000 आ जाएगा, over here it will be 10,000 तो उसका 1,000 आ जाएगा, एंड देन 1,50,000 के लिए 15,000 आ जाएगा. फिर एक बार चेक कर लेने का बेसिस कॉलम जो अपने चार थे, फ्लोर एरिया था, हॉर्स पावर था, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड इन्वेस्टमेंट. नो वेयर वेजेस एंड मटेरियल का इन्फॉर्मेशन इज गिवन. अगर मटेरियल और वेजेस दिया होता, डायरेक्ट वेजेस या फिर डायरेक्ट मटेरियल, तो वो कहाँ पे लिखते थे? खाली सर्विस डिपार्टमेंट में लिखते थे. बट इट इज़ नॉट गिवन. सो दैट्स इट. दिस इज़ माई सोल्यूशन. आई विल जस्ट टेक द टोटल. तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे. टोटल कर लेते हैं हम लोग. चलो स्टार्ट करते हैं. $1,93,000, then so this is my solution. If you see, we are done with this and we'll start with next. But before that, this is my total overheads ka cost. So just copy this. Okay. So question number 3 is done. So let's start with question number 4. But again, starting with 4, you need to remember कि पहले format क्या रहेगा, how many columns we need to prepare. First 3 columns always fixed. These columns depends on number of questions कि भाई departments कितने दिए हुए. So question number 4, it is given, in an engineering factory, the following particulars have been extracted from the year ended 31st/12/2013. Okay, particulars. Then if I talk about department, there are 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 departments. Fair enough. 3 departments in case of production, 2 departments in case of service. So let's prepare the format first. We'll rub this and we will prepare new format. Fine. So it was given in the question there are 5 departments. So accordingly, I have drawn this format, and the question which we are going to solve is question number 4. So then, first element was direct wages, then indirect, then direct material. Remember this, production department का अपने को नहीं लिखना है, खाली किसका लिखना है? सर्विस डिपार्टमेंट का. Staff number is given, electricity, then asset value, light points, area. So these details are given. The expenses for the period were as follows. This time what they have done is
सबसे पहले लोग खर्चा देते थे, फिर उसका बेसिस देते थे. This time basis is given in first table and expenses are given in second table. There are 8 expenses: power, lighting, store overhead, welfare to staff, depreciation, repairs, general overhead, rent and taxes. If I talk about amount for power, 1100, then 200, 800, 3000. Depreciation 30,000, then 6,000, 12,000, 5,000, 550. Apportion the expenses of service department Y according to direct wages and those of service department X in the ratio of 5:3:2 to the production department. You are required to prepare overhead distribution summary. ठीक है, so we need to prepare with summary जहाँ पे खर्चा distribute हो रहा है. फर्स्ट व्हाट वी विल डू इज जो 8 एक्सपेंसेस हम लोग को दिए गए हैं उसका क्लासिफिकेशन कर लेता है, फिर आगे बढ़ेंगे. तो नाउ जो 8 एक्सपेंसेस दिए हैं, देयर आर 8 एक्सपेंसेस. फर्स्ट इज पावर, लाइटिंग, स्टोर ओवरहेड, वेलफेयर. सो पावर, लाइटिंग, पावर, देन लाइटिंग, then your store overhead, welfare to staff, store overhead, welfare to staff. Is that only? store overhead के बाद क्या है आपका? welfare to staff. ठीक है. then उसके बाद था depreciation, repairs. depreciation, repairs, general overhead, rent and taxes. General overhead, then rent and taxes. Okay. 8 expenses, fine. Amount is also given 1,100. Then 200, $800, 3,000, 30,000, 612, 612, and then rent and taxes 550. ना आपको क्या करना है, बेसिस निकालना है. तो बेसिस के लिए सबसे जो फर्स्ट टेबल दिया हुआ है आपको टोटल कॉलम बनाना पड़ेगा. प्रिपेयर वन टोटल का कॉलम बिफोर डिपार्टमेंट ए. सो प्रिपेयर वन टोटल कॉलम. लेट्स स्टार्ट टेकिंग टोटल फॉर डायरेक्ट मटेरियल एंड वेजेस. चलो ले लेते चाहिए तो मटेरियल और वेजेस. ठीक है, 30,000 प्लस 45,000 प्लस 60,000 प्लस 15 plus 30, that comes to 1,80,000. Then 1,20,000 for materials. Staff number की अगर बात करें, if I talk about staff number 1,500 plus 2,250 plus 2,250 plus 750, that comes to 7,500.